किशन प्रसाद गुनाले, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी गोवा, WPU गोवा में स्थित एक नए ज़माने का विश्वविद्यालय जिसका विजन तेजी से बढ़ती दुनिया के उच्च शिक्षा की नई कल्पना करना है। सीखने के प्रति ट्रांसडिसिप्लिनरी बहुविषयक दृष्टिकोण के आधार पर निर्मित विश्वविद्यालय ऐसे स्नातकों को विकसित करना चाहता है कि जो विभिन्न क्षेत्रों में सोचने की क्षमता के साथ अनुशासनात्मक गहराई को जोड़ते हैं। WPU गोवा एक ट्रांसडिसिप्लिनरी मूल्य के ऊपर आधारित यूनिवर्सिटी का प्रथम बैच 2026 और 27 में हम शुरू करने जा रहे हैं। उसी के विषय में आज हमारा एक ये प्रेस रिलीज के लिए हम इधर आए। विदेशों में ये कॉन्सेप्ट है, इंडिया में कैसे आपको ये कंसेप्ट विदेशों की अलग अलग विश्वविद्यालयों में ये कंसेप्ट बहुत सामान्य है, लेकिन आज इंडिया में जैसे भारत में ये कंसेप्ट हम WPU गोवा के प्रति हम शुरू करने जा रहे हैं। एंड ये एक हमारा वैशिष्ट्य है कि ट्रांसडिसिप्लिनरी एजुकेशन विथ कल्चरल एंड ओवरऑल होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट we are going to have in this university. How is the response? Yes, we got a जैसा कि आप जानते हैं MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को 40 साल का एक लिगेसी है और उसके आधारित हमें इससे बहुत अच्छा रिस्पांस WPU गोवा एंड ये कंसेप्ट के ऊपर मिल रहा है। This education will be there in the English in the Goa. Dr. Supriya Paigure, and I'm the senior faculty with MIT World Peace University. So with this, as you all know that we are coming up with a new university, WPU Goa. So we are introducing a transdisciplinary approach here. So when we say transdisciplinary approach, with this approach we are starting our undergraduate programs into design, into management and integrated communication designs as well, and engineering programs. Having said that, this transdisciplinary approach will definitely help in terms of the changing education space today, and that will also have a significant role in the changing workspaces, what the industry are expecting today. So we are sure that with this approach we will be able to give the student a holistic education that will not only contribute towards his education but overall well-being of the students, that is physical and mental health. Apart from that, we also have a lot of clubs and forums through which the students can start their journey towards their likings, and they will be able to contribute to the society better. What is the significance of peace in your university? So we have been always, our founder president had been a stronger believer of peace, and we had been promoting peace through our university as well. And hence in our curriculum also we have embedded the peace programs. In our every semester there is a peace component which every student has to learn and is mandatory. And we do not follow any kind of specific tradition or culture or religion, but this is towards the holistic peace towards mankind, which our founder president always looks forward to and tends to spread the peace message, obviously to make a society a better place. Thank you.